बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सॉरी, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। डिमांड ये थी कि आप फर्स्ट ईयर को भी साथ शुरू करें और साथ सेकंड ईयर को। तो इसी सिलसिले में आज जो पहला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ वो आपकी HSSC पार्ट 1 से रिलेटेड है, यानी फर्स्ट ईयर। इसमें जो टेक्निकल चैप्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो मैं समझता हूँ वो है बायो एनर्जेटिक्स। इसी सोच के तहत जो आज हम लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं वो रिलेट करता है डोमेन एफ। जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि आजकल जो हमारी स्टडी चल रही है वो बेस करती है SLOs पर, और डिफरेंट SLOs को ग्रुप बना के एक रैंक का नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। तो आज हम किसके पास जा रहे हैं? डोमेन एफ। इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो रिलेट करता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में जो एक मेजर पोर्शन है वो होगा एंजाइम्स और दूसरा मेजर पोर्शन होगा बायो एनर्जेटिक्स। तो डियर, आज हम पहले डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द बायो एनर्जेटिक्स। आप जो समझते हैं ये चैप्टर बड़ा लेंथी चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आज इसका इनिशियल लेक्चर होगा जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बायो एनर्जेटिक्स वाले पोर्शन के अंदर क्या कुछ हमने पढ़ना होगा। सो कमिंग टुवर्ड द बिजनेस, द फर्स्ट टॉपिक आर द हेडिंग दैट वी कैन टेक इज द कॉन्सेप्ट। किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली आपका अपना कॉन्सेप्ट अबाउट दैट चैप्टर क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं या क्या डिस्कस करेंगे। बायो ऑफ कोर्स लाइफ, एनर्जेटिक्स TICS, जैसे आप कहते हैं मैथमेटिक्स मीन समथिंग द डिसिप्लिन रिलेटेड टू द कैलकुलेशंस। Similarly, you can talk about statistics, TICS, mean the discipline related to the calculations. Same goes to the bioenergetics, mean that some kind of discipline related to the living organism, mean the life. But what does the energy refer to? Mean energies. So concept is very much clear. The discipline related to the energies where inside the living organisms. So मैंने कोशिश की इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की by making this sketch. आप देख सकते हैं this is one form of energy A, and that is coming from the sun, of course in the form of light. That has to be taken by the green plants by the process of photosynthesis. As a result, one form of energy is converted into another form of energy. See, this is another form of energy, let me call it as B. For the purpose of understanding, I say it is chemical energy contained inside the food. So what happened? During another process, this energy which is contained inside the food will be transformed into another form of energy. And that will be, of course, ATP and heat. If you look into the sketch, you can understand that one form of energy, that is light, is being transformed into another form of energy, that is chemical energy of food, and B is transformed into another form of energy, that is C, maybe in the form of ATP or heat. So what is going on? Actually, the one form of energy is being transformed into another form of energy. This is what the bioenergetics is. Now we can define it is what? That branch of science dealing with the interconversion of energy within the living systems. That branch of science is referred as bioenergetics. If I say which process is going to convert A into B, of course it is photosynthesis. And which process is going to convert B into C? The process is respiration. So it means that in this chapter we will discuss one, the photosynthesis in detail. Second major topic will be respiration, and of course third will be related to the ATP, mean that's the type of energy or the energy packets.
So this is what the whole sum of it chapter that we will discuss the photosynthesis. After that you'll proceed toward the respiration, and then of course you'll talk about what? ATP, that is the energy. So what is the conclusion? Mean it is that discipline deal with the interconversion of energy within the living systems. That science is called as bioenergetics. Now go into the detail. You can say some of the reactions which are taking place in the living organisms are constructive, mean that something is being prepared, and some are destructive, mean that something will be degraded. टूट जाएगी कोई चीज और किसी में कोई चीज बनेगी. अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर समथिंग, बना रहे हैं. Therefore this reaction is called as anabolic reaction. And what about the other? During which something has to be broken down, तोड़ेंगे उसको हम, तो that process must be referred as catabolic. And example is respiration. You can see that two categories of reactions are taking place in the living organism. One anabolic, other catabolic. Catabolic plus anabolic is equal to metabolic reactions or metabolism. Now if examiner asks you define anabolic, we can define catabolic, we can, or even define metabolism by giving the example. So we can define what the metabolism is. Even still he asks you one example of anabolic reaction. That is very obvious. Photosynthesis. One example of catabolic reaction. Obvious. That is the respiration. Now as per scheme, we can talk about the first aspect of this bioenergetics, and that relates to the photosynthesis. Now first, try to find out the basic concept or the definition of photosynthesis. Then we'll proceed toward the factors, and of course most complicated topic is mechanism. So I'm talking about the photosynthesis. क्या है? अपने आप को समझाना होगा. Photo, of course, light, scientific word. Photo means light. Synthesis, to synthesize, to build, to group together, to bring the things together, mean to build something. So that is very obvious, the process by which something has to be prepared in the presence of light, and that process must be referred as photosynthesis. So if we go into the definition, you can find it is process. No, it is biological process because it is taking place in the living organism. So it is biological process by which carbon dioxide combined with water in the presence of light and pigments to prepare glucose plus water along with the release of oxygen. So this equation shows what? The process. What kind of process? Biological. Why? Because taking place in the living organism. What happened? We are going to take carbon dioxide from the environment, water from the environment, light as a source of energy. Pigments are going to absorb the light. Reaction will take place. As a result, we will be able to get what? C6H12O6. That is of course the glucose plus water and of course oxygen. So definition says it is anabolic process by which living organism prepare their food in the form of glucose along with the release of oxygen. Now gentlemen, सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? The answer is no. In animals, no photosynthesis. In fungi, no photosynthesis. So which group of plant is going to carry on the process of photosynthesis? Yes, these are called as autotrophs. Autotrophs mean the plants which are capable to prepare their own food. But you know that we will have the detail. तमाम autotroph photosynthetic नहीं होते. कौन से होते हैं जी? Green plants. So I can say, when I say living organism, I will say accurately that the green plants are autotroph which are capable to prepare their food by the process of photosynthesis. There is another definition you can have, जो कि आप बड़ी क्लास में जा चुके हैं, तो इसकी डिटेल डेफिनेशन किसी और फैक्टर की तरफ से भी आ सकती है, किसी और एंगल से भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. You can see what about the carbon dioxide.
Inorganic, water. Inorganic. What about the glucose? Organic. You can see that we are going to convert the inorganic substances into the organic. So you can have another definition that the biological process by which inorganic substances like carbon dioxide and water are transformed into the organic substances like glucose in the presence of light and pigment along with the release of oxygen. This process is also referred as photosynthesis. I repeat, conversion of inorganic substances into organic in the presence of light and pigments. Now this was what the definition, of course, taking place here inside the plants. What kind of plants? Green plants. Now there are some other questions, or the side questions related to the definition. From where we are going to get the carbon dioxide? Of course from the environment, that is the air in case of terrestrial plants, or water in case of aquatic plants. What about the water? Of course the water has to be taken from the side through root air. What is the source of light? Of course the sun. And light travel in the form of electromagnetic waves. हम पढ़ेंगे इसको details. The pigments mean any coloring substance present in the living organism. And we can talk about the chlorophylls, not chlorophyll, rather chlorophylls, because different kind of pigments are there. We will have the detail later on. Glucose will be produced, water will be produced, and oxygen will be released to the environment. So this is the oxygen, which is actually source of life for the living organism. कि भाई यही ऑक्सीजन है जो हमें मिल रही होती है फॉर विच प्रोसेस? फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. तो कोई पूछ ले कहाँ से CO2 लिया? एनवायरनमेंट से. वाटर कहाँ से लिया? एनवायरनमेंट से. लाइट कहाँ से आई? सन से. पिगमेंट्स किधर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. बना क्या? ग्लूकोज प्लस क्या? वाटर प्लस क्या मिला हमें? ऑक्सीजन. कहाँ जाएगी? टू द एनवायरनमेंट. किस लिए? टू बी यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि क्या तमाम लाइफ फॉर्म फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती हैं या? आई रिपीट, whether all the life forms depend upon the process of photosynthesis or not. So my answer is yes, but we have to justify. Talk about the basic necessity of life. One is the oxygen, yes. And what about the other? Of course the food. एक क्या चाहिए मुझे? ऑक्सीजन. दूसरा क्या चाहिए? फूड. तो जरा गौर कीजिएगा कौन बना के आपको दे रहा है? यस, फोटोसिंथेसिस. आई से नो फोटोसिंथेसिस, then there will be no food, there will be no oxygen. If no food, no oxygen, then there is no question of life. So yes, we can say that entire life depends upon the process of photosynthesis for its survival. क्या फोटोसिंथेसिस हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है या नहीं? जनाब कर रहा है. एनवायरनमेंट से क्या उठा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. वापस क्या कर रहा है? ऑक्सीजन. तो क्या ये वही काम नहीं कर रहे प्लांट्स जो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स कर रहे होते हैं? जरा रिकॉल कीजिएगा लंग्स का रोल. CO2 बॉडी से निकालना, निकाल दिया. ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ऐड करना, कर दिया. तो मैं क्यों ना कहूँ कि प्लांट्स एक्ट एज लंग्स ऑफ द नेचर. व्हाई? बिकॉज दे आर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिप्लेसिंग व्हाट? ऑक्सीजन टू द environment. So generally it is said that plants are what? Lungs of the nature, because they purify the environmental conditions by removing carbon dioxide and adding oxygen. There is another question. क्या फोटोसिंथेसिस का ग्लोबल वार्मिंग के साथ कोई रिलेशन बनता है? Yes. एक फैक्टर जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो भाई प्लांट क्या कर रहे हैं? CO2 की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं. कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जितनी कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग के उतने ही चांसेस, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी. मैं फर्ज करता हूँ जब प्लांट ग्रो नहीं करते हैं तो क्या होगा? डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर and increase concentration of carbon dioxide, and you can imagine what would happen.
global warming, greenhouse effect, and so on and so on. So this is the definition. Inshallah, I'll discuss the factor in detail right now. In today's lecture, you must know how many factors are involved in the process of photosynthesis. This equation help you. One of factor is carbon dioxide, other is water, third is light, fourth one is pigments, and there is another factor. Can you recall? Yes, the temperature, because every chemical reaction is affected by the variation in the temperature. So if someone asks to enlist the factors affecting the rate of photosynthesis, you will say what is the carbon dioxide, water, light, pigment, and of course what, temperature. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हर एक फैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इफेक्ट करता है और किस तरह से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्लो या फास्ट करना होता है. आज के लिए इतना ही काफ़ी. खुदा हाफिज़. और इंशाल्लाह अभी सीक्वेंस से लेक्चर चलते चलते हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. खुदा हाफिज़. अल्लाह.